All right, ladies, a very, very good evening. I hope you guys are all doing good. Welcome to Forever Star India, and your first step, that you have cleared has brought you here. So, congratulations to all of you, first of all, for completing your audition successfully. आप लोगों ने prove किया that you have the potential to learn, you have the capability to learn. Of course, all of you have your different journeys to share, different backgrounds, and हर किसी का एक different goal है. But the final destination is, I'm sure, like I always say, is to create a unique identity for yourself. अपनी एक पहचान बनाना, where people know you by your name, and you end up creating a space, where when you talk, people take you seriously. So आपकी पहचान बनाने का ही एक जरिया हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, स्पेस क्रिएट किया है, where it does not matter आपको पहले कितना एक्सपीरियंस है. The only thing that matters here is how passionate you are, because आपको सिखाने की, आपको एग्जाम में पुट अप करने की, एंड टू प्रिपेयर यू, उस सब की जिम्मेदारी हमारी है. So re-emphasizing the fact that Forever Star India is not just a beauty pageant. Now, why do I say this? Because I always say कि आप लोगों का final destination है to win the crown as soon as possible. But this platform is not just about the crown. And I'm sure everybody has understood some gist of it by now. Now, by that, I mean that we are a community of women who have successfully, proved their potential, and have the will to create a unique identity for themselves. They are talented, passionate, and like-minded, just like you all are. So thank you so much for putting your heart and soul into the auditions, but actual journey ab shuru hogi, because it's always good to learn as much as you can. In fact, आप लोग अपने आप में एक इंस्पिरेशन हो, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप सब में जो कॉमन है वो ये है, यू गाइज हैव प्रूव्ड दैट एज इज जस्ट अ नंबर. एज से नहीं डिफाइन होता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, एंड उससे ये भी डिफाइन नहीं होता है कि आपकी दायरे क्या हैं, बिकॉज देयर इज नेवर अ लिमिट टू लर्न ऑफ हाउ मच यू कैन लर्न, and that is what you represent today. So thank you so much once again about the platform and about season 2021. It gives me immense pleasure to inform and acknowledge the fact that Forever Star India season 2021 created a world record history, in fact, by crowning 300 plus winners from across the country. और इस साल का चेहरा आप लोग बनने वाले हो सीजन 2022 का. Most of you are going to shine across with your unique identities, representing your respective cities, states and nationals. So 3 लेवल पे क्राउनिंग होने वाली है, जैसे कि हमने ऑडिशन में डिस्क्राइब किया था. पहले आप अपने सिटी लेवल पे विनर बनोगे, then state and then nationals. Of course, we'll be discussing these all, this all information in the coming sessions in detail, but it's good to have a hint of what the platform is about. Now, let's move over to what this season is going to be about. This season is all going to be about you. All about you. And why do I say that? Because आप ही से ये, platform represent होता है. आप season 2022 के चेहरे हैं. And it's only up to you how seriously you take this opportunity. Because one thing that I'm very sure about, आज के time पे competitions तो बहुत platforms करवा रहे हैं, but there is hardly any platform that is ready to take grooming sessions so seriously. यहाँ पे आपको अगर scratch से सिखाने की responsibility हमारी है, तो आपसे सिर्फ एक ही चीज expect की जा रही है, your sincerity, your hard work and your commitment into the platform. There can be n number of excuses. I know आप लोग established individuals हो अपनी अपनी life में. कुछ लोग होम मेकर्स हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं, एंड सम पीपल आर फ्रीलांसर्स. बट द बॉटम लाइन इज यू आर हियर फॉर अ रीजन, एंड आई एम श्योर एवरीबडी नोज देयर ओन रीजन. Now, without any further ado, let me just bifurcate the entire process of Mrs. India 2022. Mrs. India 2022 में 2 प्राइमरी कैटेगरीज हैं. इफ यू गाइज आर नॉट येट अवेयर, हम लोग की 2 कैटेगरीज हैं. लास्ट ईयर भी थी, इस साल भी, because I think it's unfair to compare a married woman who is 20 to a married woman who is 45. So first category है 18 to 35 and second category है 36 to 50 age group. So दोनों ही categories का representation और winners separate होंगे. So basically Mrs. India में 2 bifurcations आ जाती हैं, group 1 और group 2. So last year we had 2 national winners, 2 title holders from each category.
at number 1. And similarly, the process, keeps on fluctuating. And about what happens and what is exclusive this year, इस साल की शुरुआत से ही एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट आप सब लोगों को मिलने वाला है, वो है द एक्सक्लूसिव FSIA मेंबरशिप ऑफ द एप्लीकेशन. हमारा खुद का ऐप हम मई मंथ में लॉन्च करने वाले हैं, which is all going to be about a space where you can showcase your talent, your live sessions live to the entire nation on a single platform. Because अपनी पहचान बनानी है, अपने आप को represent करना है, so you have to ensure that your visibility is strong, and that happens जब numerous thousands and thousands of people, lakhs of people watch you, right? So इस ऐप के थ्रू आपको मौका मिलेगा आपके ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स से डायरेक्टली इंटरैक्ट करने का. Why is this app so different? There are so many social media apps where you can interact with so many people. But आपकी फील्ड से रेलेवेंट एक्सपर्ट से डायरेक्टली टच में आना एंड टू नो हु इज द राइट पर्सन टू गेट इन टच विद इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस फील्ड में नेटवर्किंग की जितनी वैल्यू बताई जाए उतनी कम है. मेकिंग द राइट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स, सेफ कॉन्टैक्ट्स. व्हाई डू आई से दिस? बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वेरीफाइड मेंबर्स ही ऐप पे जाएंगे, which is basically you guys and of course the trainers जो आपको ट्रेन करने वाले हैं. Imagine आप उन्हें अपना talent directly showcase कर पा रहे हैं, you get noticed, you are visible. Imagine the collaborations, the space of business opportunities it will get you into. Secondly, उन trainers से आप directly उनकी expertise access कर पाओगे. Training sessions will be an hour or 45 minutes. लेकिन उसके अलावा भी आप उनको directly access कर पाते हो, वो जो भी सिखाते हैं समझाते हैं उस ऐप के थ्रू. So before my information gets technical, let's start with today's, training session. That is, me giving up all the brief of the platform, and we'll be always, discussing and refreshing the memories all together all over again. So I now welcome my team FSIA, the head team for that matter, the two leading ladies, Miss Kirti Choudhary, the director, who is going to be giving you the core basics of virtual training sessions today. And second, I have with me Jaya Chauhan, who is also the director of Forever Star India and is going to be the guiding light for you guys in the coming sessions. So it gives me immense pleasure to hand over the mic to Kirti ma'am, who is going to be your expert for the day, and for her to take over and express and inform you everything in detail of how you're going to build a base for yourself in the coming sessions. So one more request, please do not unmute yourself unless asked to, क्योंकि speaker view fluctuate होता है तो आप में से काफी लोगों को problem आएगी. So Kirti ma'am, welcome on board and over to you. Thank you so much, Herry, and a lovely evening to my ladies, or I shall say participants of Forever Mrs. India 2022. All of you are looking lovely. You are looking excited. I can see your expression. You're just waiting कि कब हमारा training start होगा, आज हमें क्या बताया जाने वाला है. So that excitement has to stay intact for the coming 3 to 4 months. This is what I want to request. And we have been mentioning time and again that only and only your dedication and your sincerity is going to take you forward on this platform. Because here we are there to inspire each other, right? When we took your auditions, you talked about yourself. A lot of you, you are passionate about being here. You're passionate about making a difference through this platform on this community. So, we said that even we are inspired looking at you managing your homes, managing your families. And now, if you win the crown, or even if you do not win the crown, after these training and grooming sessions, there is going to be a huge difference in the way you present yourselves, in the way you walk, in the way you talk about yourselves, and in the way you present yourselves in front of an audience. So this is why we are here today. Our first session is about virtual presence. Now, let me just tell you that why are we talking about virtual presence? हम किसी और चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मेकअप की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? Why aren't we talking about your ramp walk? Or, why aren't we talking about your presentation on stage? Because this platform, Forever Star India community, it is conducting these beauty pageants 90% on virtual platform, right? So I'm sure you understand what do we mean by virtual. Right now, we're taking these sessions on Zoom. Gradually, we will be shifting these sessions to our own application, FSIA application.
right? So whether you are a part of these sessions here on Zoom or on our application, we are going to interact 90% of the times virtually, which means you have to make sure that whatever you are presenting on this screen is apt according to this platform. You act in a professional manner today onwards, because you are the official participants of Forever Mrs. India 2022. It is a big deal. ये कोई छोटी चीज नहीं है. आपको ये नहीं सोचना है कि मैं Forever Mrs. India में ही तो participate कर रही हूँ. नहीं, आप Forever Mrs. India में participate कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है. And already ये आपके लिए एक achievement होना चाहिए. And you have to make sure कि आप immature तरीके से या unprofessional तरीके से इस platform पे या अपनी normal lives में भी अब नहीं रहेंगे. People should be talking about you when they look at you. They should understand that, okay, she's a part of Forever Mrs. India. Just look at her, look at the way she's talking, look at the way she's walking, and look at her, the way she's entering the room. ये होना चाहिए in training sessions के बाद. So I am just sharing my screen right now. So here it is, your first training session. The picture that you can see, this is from our last year, where we crowned 300 plus winners from across the country. आपको already ये information दी जा चुकी है कि हम एक बार history create कर चुके हैं और दूसरी बार इस बार फिर से history बनाएंगे. So this is the picture of our CEO and founder, Mr. Rajesh Agrawal. He is crowning Forever Mrs. India in first category from last year 2021. And now let's talk about virtual presence. 90% जो आपका process है वो virtual होने वाला है. इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप किस तरीके से स्क्रीन में आते हैं. How are you dressing up? What kind of makeup you've done? How have you done your hair? What earrings you're wearing? आपका background कैसा है? आपका angle कैसा है? यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप स्क्रीन पे आते हैं, which we will be covering step by step in today's session. So make sure you note each and everything down. क्योंकि आगे वाले सेशंस में आपको वर्चुअल प्रेजेंस के बारे में नहीं बताया जाएगा. आपको अपना टैलेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप कितना इफेक्टिवली उसको स्क्रीन पे दिखा सकते हो वो भी आपको देखना पड़ेगा. Because I'm sure all of you understand that you are going to put in more than your 100% in dressing up. आपकी रैंप वॉक बहुत अच्छी है, आपने मेकअप भी बहुत अच्छा किया है, बट अगर स्क्रीन पे आप विजिबल ही नहीं हो अच्छे तरीके से, आप क्लियरली नहीं दिख रहे हो या आप पूरे तरीके से नहीं दिख रहे हो, तो क्या जूरी मेंबर्स आपको जज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. So there is a possibility that if you miss out on creating a strong virtual presence on this screen, you might get a lesser score than a candidate who is performing lesser than you. ये हो सकता है. Now let's talk about the steps. When you started, your first step was registration, which happened online. आपने हमारी website के through register किया. Registration के बाद you appeared for your audition virtually. Then you received your audition report card. And after receiving your audition report card and getting selected in your audition, you completed your participation process. And now here we are in the fifth step of this process, that is your training session. We are officially starting with your training sessions. Now, how are these training sessions going to go ahead? We will have a number of experts, image consultants, fashion stylists, fashion designers, makeup consultants, choreographers, and ramp walk experts. All of these trainers together are going to help you in becoming the best version of yourselves. You have to make sure that you attend each and every session, because रोज आपके sessions नहीं होने वाले हैं. Once or twice a week you will be a part of these sessions. So you can take out some time from your busy schedule if you really want to be there during the finale. Right? क्योंकि इन्हीं ट्रेनिंग सेशंस के बेसिस पे आपके टैलेंट राउंड्स कंडक्ट किए जाएंगे. There are going to be 3 talent rounds: talent round 1, talent round 2, and talent round 3. You are getting these 3 very crucial chances of proving yourselves. ऑडिशन में आपको एक ही चांस मिला था, लेकिन आपके पैशन के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया गया था. राइट? इवन इफ you are not from this background, आपको रैंप वॉक नहीं आती है, आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन अगर आप पैशनेट थे
तो आपका सिलेक्शन हुआ ऑडिशन में, बट नाउ इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि हम आपको जब ट्रेन करेंगे तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन ट्रेनिंग्स को सीरियसली लें और अप्लाई करें अपनी लाइफ में, राइट? एंड ग्रेजुअली आपके रैंप वॉक के बेसिस पे, आपके मेकअप स्किल्स के, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड आपके कॉन्फिडेंस के बेसिस पे इन तीनों टैलेंट राउंड्स में आपको जज किया जाएगा, right? And the score for all of these talent rounds will be uploaded on your profile. आपकी Forever Star India की प्रोफाइल आपको पता होगी, you have your ID and password for the same. Gradually वो एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे लॉग इन करेंगे, राइट? तो आपका जो स्कोर होगा टैलेंट राउंड 1 के बाद आउट ऑफ 10, इट विल बी अपलोडेड देयर ऑन योर प्रोफाइल. You will not have to ask anyone for that matter that what is my score, मेरा इतना कम क्यों है, इतना ज्यादा क्यों है. वहां पे आपका स्कोर बहुत ही ट्रांसपेरेंटली अपलोड हो जाएगा. एंड एट द एंड ऑफ दीज टैलेंट राउंड्स, यानी कि इन टैलेंट राउंड्स के बाद में आपके स्कोर के बेसिस पे वी विल बी शॉर्टलिस्टिंग सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, और आई कैन ऑल्सो से सिटी विनर्स. यानी कि अगर आप जयपुर सिटी से हैं, आप मुंबई सिटी से हैं, आप नासिक से हैं, आप अमृतसर से हैं, so we will be selecting forever Miss India Amritsar, right? Forever Miss India Delhi, forever Miss India Mumbai. ये सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के सिलेक्शन के बाद हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन करेंगे. यहां तक का सारा प्रोसेस वर्चुअल होने वाला है. सो लेट दिस फीलिंग सिंक इन कि आपको इस लेवल तक कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करना है. ऑफ कोर्स अगर आप सिटी लेवल पे सिलेक्ट होते हो या आप स्टेट लेवल पे उसके बाद में सिलेक्ट होते हो, देन यू विल बी कमिंग फॉर द फिनाले. बट उसके पहले just at the comfort of your homes, you will be attending these training sessions and you will be appearing for these talent rounds. Now, again, as I've already mentioned, that you will solely be judged on the basis of your progress. We are not going to compare you with each other. Madhuri, you will not be compared with Upali, or Athardeep, you will not be compared with Madhuri. You will be compared with your own progress. Where were you during the auditions, and what is the improvement that you have made after auditions, after the trainings that you have received, right? So let's talk about these talent rounds in a little detail, and I would request Herry to talk about these rounds. Thank you. Thank you so much, Kirti ma'am. Thank you. And don't worry, Kirti ma'am will be coming back with more details. आपकी training अभी शुरू होगी, but we have to lay a groundwork to make sure you understand that आगे का process क्या रहने वाला है. Just one thing, ये सारी details देख के panic नहीं create करना है, इनको समझिए. We are just laying a base for it. हर session में we'll be refreshing these details, okay? And we'll be also talking about everything again and again to make sure that आपको बहुत clearly समझ आए. आज सिर्फ एक basic, मैं description देने वाली हूँ. So just understand how the whole thing is going to work. Before I start with the talent round details, there's one disclaimer that I would like to give, and that is start walking in your stilettos. So अपने flats, sneakers, shoes को टाटा bye bye कहने का time आ गया है. It's time to walk in those heels. And when I say heels, these are not just heels of wedges and block heels. These are stilettos. Stilettos होते हैं जो हमारी pencil heels होती हैं. Minimum 3 to 6 inches is the requirement. Why do I say this? Because this is something जो आप अपने level पे start कर सकते हो. Ramp walk is a technical walk that you have, but heels में basic चलना आना is something that you need to take seriously. So मेरा तो पर्सनल सजेशन है कि अगर किचन में भी जा रहे हो तो हील्स में जाओ. That is how it's going to be. Why do I say this? ताकि जब एक ट्रेनर आपको रैंप वॉक की ट्रेनिंग स्टार्ट करे तो आपको बेसिक फॉर्मेट अपना पर्सनल लुकआउट हील्स के साथ ऑलरेडी पता हो. Invest in good basic color stilettos, nude or black would be my suggestion, जो कि आपको बहुत long duration में काम आएंगे, even in the finale for that matter. So उसमें जब आप invest करते हो, you can start handling and getting to know those heels for that matter. Because कभी भी कोई भी footwear हो, कितना ही expensive हो for that matter, लेकिन पहली बार पहने पे वो दिक्कत करता है, especially when it's heels. So stilettos पे आप धीरे-धीरे get used to your footwear, understand your footwear and what works for you.
उससे जब आप खुद को नॉर्मलाइज कर लोगे, तो जब आपकी रैंप वॉक की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आपको सिर्फ टेक्निक पे फोकस करना होगा, नॉट टू स्ट्रगल विद योर हील्स. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. एंड रैंप वॉक इज गोइंग टू बी द की क्राइटेरिया जो आपके तीनों टैलेंट राउंड्स में होगा. ऑफ कोर्स हम रैंप वॉक की ट्रेनिंग बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग दैट नोबडी नोज नथिंग. इवन अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ आता भी है, आपको ट्रेन उसी फॉर्मेट से किया जाएगा, बिल्कुल ए लेवल से. ऑलराइट, बट दिस इज माय पर्सनल सजेशन एंड समथिंग दैट यू शुड टेक सीरियसली इज दैट आपको हील्स के साथ एक नॉर्मलाइज एटीट्यूड आ जाना चाहिए. यू नो, योर बॉडी शुड फिगर हाउ टू वॉक इन हील्स, इफ नॉट अ रैंप वॉक, बिकॉज चलने में और रैंप वॉक करने में फर्क होता है. वी नीड टू गेट यू टू अ लेवल जहाँ पे आप चल पाओ हील्स में. So I hope I've made myself clear इस चीज के लिए. This is something that everybody needs to take seriously. Now, dress up. Let's get to the talent round details. Talent round 1, और हर talent round से पहले आपकी trainings होंगी. So it's not just going to be an exam. It's going to be your coaching first and then your exam. So talent round 1 is going to be about you, your personality, and who your idol is. Dress code is going to be dress up according to your personality. जो आप पे स्लाइड शो हो रही है, इस ये डिटेल्स आपको वीडियो में भी भेज दी जाएंगी और प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी. सो राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. So dress up according to your personality. It can be anything and everything, but still you have to make sure you leave an impression that is strong. Because I'm sure, चाहे हम इसी बॉक्स में हैं, but whenever the cameras get on, we understand and we take an impression by how the person is looking. So it has to be done in a certain way. Secondly, talk about your aspirations with respect to this platform. तो जो सबसे मेन क्वेश्चन हमने ऑडिशंस में एड्रेस किया था, उसको आपको और समझदारी से और क्लैरिटी से एड्रेस करना है कि व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ इन रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म, इन रिस्पेक्ट टू द क्राउन दैट यू वांट टू विन. कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो इफ यू विन द क्राउन, एंड यू नो व्हाट इज दैट मोटिव दैट यू हैव फॉर विनिंग. हाईलाइट डिटेल्स अबाउट योर आइडल इन लाइफ. तो अगर पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एस्पिरेशंस, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके टैलेंट राउंड 1 का होगा जिसमें आप बात करोगे कि आपका आइडल कौन है in terms of the glamour industry. Very important, because that has to be, you know, someone that you relate with, और उसको आपको बहुत सोच समझ के उसके बारे में बात करनी है, because वो talent round 2 से भी connected होगा. Now talent round 2 is going to be about, you know, talent round 1 में अगर हम बात करें तो end में there will be a ramp walk and interaction with the jury members. And when I say interaction, that means it's going to be an open space where jury can ask you and discuss with you anything and everything about your performance. तो आपकी preparation के बारे में, you know, आपके idol के बारे में there can be questions asked. So be prepared. हो सकता है, you know, बहुत ही basic question पूछा जाए, but I would say it's all about the confidence that you have कि आप कुछ भी answer करो. अगर आप झिझक के करोगे तो it will show that you have not prepared. अगर आप confidence के साथ करोगे तो कम भी अगर आप बताते हो तो it creates a great impression. And talent round 2, moving to that, it will be showcasing your talent in regards to dressing up according to your idol. So जिस idol के बारे में आप first round में बात करोगे, that cannot be just, you know, सिर्फ impression create करने के लिए मैंने बात कर दी, लेकिन that has to be taken seriously because it is connected to your talent round 2, क्योंकि आपको, you know, अपने idol की तरह ही dress up करना है. Your makeup and conduct should be according to your idol that you select. It can be any iconic character, it can be any iconic expression that you want to reiterate. I'm sure everybody idolizes when, you know, एक ग्लैमर इंडस्ट्री से हर किसी का एक आइडल जुड़ा होता है, बीट सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, इट कैन बी एनी पर्सन फॉर दैट मैटर. एंड अगेन रैंप वॉक टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड इंटरैक्शन, जो कि रहेगा ही हर टैलेंट राउंड में. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टैलेंट राउंड 3, because everybody deserves a showstopper moment. So even if you don't make it to the finale, you have to treat this round as your showstopper round. So in those, you know, glamorous outfits, this is going to be your best input in terms of, you know, ramp walk. So तब तक आपकी ramp walk की training बहुत technical level तक complete कर दी जाएगी, simultaneously जो चलेगी. So here the only primary criteria will be your ramp walk. बाकी दो talent rounds में if the variation goes on to how much we want to know about you, this talent round is going to be just and just about your showstopper moment and your ramp walk.
So I hope you understand the progress we expect, क्योंकि तीनों rounds में walk है, तो this is just about that. And of course, there will be an interaction here as well. So that's it from my end. Again, re-emphasizing, panic नहीं create करना है. This is going to be fun because here you get to learn also. हर round से पहले respective training sessions होंगे. There will be makeup artists, image consultants, ramp walk trainers, and multiple other experts training you. So do not worry about anything. And now I would shift back the mic to your actual training part to Kirti ma'am. Thank you, Herry. Thank you so much for explaining these talent rounds in detail. I'm sure, the participants have got some idea about how are they going to present themselves now, right? Unko ramp walk kitni karni hai, unko khud pe kitna dhyan dena hai. But again, do not panic. You will be shared these details again. आपके पास ये जो presentations हैं, ये भी share की जाएंगी. And along with this, with each and every training session, everything will be refreshed and brushed upon. Right? So now coming to virtual presence. Virtual presence के बारे में अभी हमने बात की कि क्यों हमारे लिए ये जरूरी है. लेकिन एक चीज मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ, because I can see a few candidates here कि आपका virtual presence अभी मुझे नहीं strong लग रहा है, right? So I'll just give an example. And examples मैं यहाँ पे जब देती हूँ, so you do not have to take anything personally, right? All of us are learning. Even I am going to learn a lot of things from you. और अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ technical, कुछ basic बता रही हूँ, so let's take it all very positively and let's inculcate it. अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी help करेगा presentation में, then you must inculcate it without taking it negative. So जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस गर्ल शी इज टॉकिंग टू 6 पीपल एट अ टाइम, लेकिन इनका जो एंगल है या जिस तरीके से ये बैठी हैं, जो पोस्चर इन्होंने मेंटेन कर रखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट इमेजिन मी सिटिंग लाइक दिस. वुड यू टेक मी सीरियसली? वुड यू? एंड व्हेन आई एम सिटिंग लाइक दिस, व्हाट्स द डिफरेंस? बहुत एक मेजर डिफरेंस नहीं आता है, बट द वे यू लुक upon me, but the way you take me, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है. अगर आप बार बार अपने बालों में हाथ चला रहे हैं और you are moving a lot, आप स्टेबल नहीं है, आपका पोस्चर सही नहीं है, और if I say आपका एंगल सही नहीं है. So we'll first come to the second point, the stability of your camera, the angle of your camera, right? If I see Upali, तो Upali नीचे देख रही हैं, राइट? उपाली आप नीचे की तरफ देख रहे हो, उसकी वजह से आपका आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है. तो आपका जो कैमरा है, और आई मस्ट से योर लैपटॉप और योर फोन, आप उसको ऐसी पोजीशन में रखिए कि आपके आई लेवल पे कैमरा होना चाहिए, राइट? मोस्टली क्या होता है कि या तो हमारा कैमरा बहुत नीचे है या हमारा कैमरा बहुत ऊपर है. नाउ हाउ डू वी मेक श्योर कि वो हमारे लेवल पे है? We have to maintain a distance of 1 or 2 inches between the top of our head and the top of our screen. Now, आपकी screen vertical भी हो सकती है, मेरी तरह horizontal भी हो सकती है. It depends. If you are using a phone, you will be coming in a vertical screen. But if you are using a laptop or a desktop, then it is going to be a portrait mode. यानी आप horizontally दिखोगे. बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपका जो पोजीशन है कैमरा का, वो इंटैक्ट हो, वो सही हो, और आपका आई कांटेक्ट मेंटेन हो. इसके लिए आप ये वाली चीज हमेशा याद रखेंगे, 1 or 2 inches गैप बिटवीन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन एंड द टॉप ऑफ योर हेड. नाउ अगेन, इससे बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है. यू जस्ट लुक मोर प्रोफेशनल. जस्ट लुक एट मी. अगर मैंने अपनी स्क्रीन ऐसे रखी होती तो आपको क्या दिख रहा है? यू कैन जस्ट सी माई हेड, राइट? बट अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, तो आप जो मेरा अपर हाफ है बॉडी का, which means you have to make sure that the first half, the upper half of your body is visible. I'm sure everyone understands. ये मैंने बार बार repeat इसलिए किया है because अभी भी I can see you are not maintaining a proper angle on screen. Do not worry. इस session के बाद आप फिर से अपना zoom on कीजिएगा and then try and see for the perfect position. जैसे कि यहाँ पे फोन उन्होंने पाइल ऑफ बुक्स पे रखा हुआ है,
आप उसी तरीके से किसी टेबल पे बुक्स रख सकते हैं, कोई बैग रख सकते हैं, उसके ऊपर यू कैन कीप योर फोन और लैपटॉप, एंगल बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे आने वाले सेशंस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज सस्टेन योर एनर्जी. Now, everyone who comes on screen has a different set of or a different level of energy. Now, when you saw Herry Khosa speaking, didn't you feel कि कितनी energy है इस लड़की में, right? लेकिन आप कभी किसी और को देखोगे तो आपको लगेगा, you know, she's a very balanced person, बहुत calmly बात कर रही है, right? So every person is different, and it depends on you that how do you portray yourself on the screen. Right? How do you wish to be portrayed on the screen? अगर आप एक high energy individual की तरह आना चाहते हो तो वो energy आपके अंदर होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए screen पे, right? And as I always say that eat something nutritious before you are coming for a session or before you are coming for a talent round. Eat a banana, eat some dry fruits, eat dates. ऐसी चीजें खाइए जिससे आपको instant energy मिलती हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केपेबल तो हैं, आपको बहुत अच्छी रैंप वॉक आती है, लेकिन जब आप स्क्रीन पे आए तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया, मे बी बिकॉज यू वर अ लिटिल नर्वस, तो आप अपना परफॉर्मेंस 100% नहीं कर पाए, राइट? उसके लिए आप क्या करेंगे कि अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखेंगे. यू विल बी ईटिंग हेल्दी फ्रॉम नाउ ऑन so that you are able to sustain your energy levels during the whole session, because कभी कभी सेशंस में 2 hours भी लग सकते हैं, कभी कभी 3 hours भी लग सकते हैं, right? So you should be prepared for that. Position on screen we've already discussed, ये जो gap है ये हमेशा 2 inches का होना चाहिए. Now we are coming the most important part of your virtual presence, that is your body language. So the experts say that 55% of your communication comprises your body language. यानी कि जब भी आप communicate करते हैं, whether it is a formal presentation, whether it is an informal presentation, लेकिन आपका 55% जो message है वो आपकी body language के through जाता है. Now, what is body language? What does your body language include? Your body language includes your facial expressions, your hand movement, your shoulders, your torso movement, your legs, and your feet movement. But here, specifically, I am talking about virtual presence. So it means your virtual presence will only comprise your upper part of the body. That is your facial expressions, your eye contact, your hand movement, and of course, the shoulders. ठीक है? तो सबसे पहले हम facial expression की बात करते हैं. आपको ये हर सेशन में बोला जाएगा that you have to stay on mute, but your video should be on. आपकी वीडियो हमेशा ऑन होनी चाहिए unless it's something urgent or it's an emergency, या आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप नहीं अपनी वीडियो ऑन कर सकते. But otherwise, you will have to keep your video on. Why? Because each and every activity of yours is being noticed. Right? I said initially that you are a part of a professional platform now. You are an official participant of Forever Mrs. India. So do not take anything lightly, right? Even the way that you're sitting right now, the way that you're smiling, we are noticing, right? The team is noticing. बहुत से इनविजिबल मेंबर्स भी होंगे हमारे टीम के यहाँ पे जो आपकी एक एक एक्टिविटी को नोटिस करने वाले हैं, and gradually when they'll be scoring you, gradually when they'll be shortlisting the city and state representatives, they will be taking these pointers into account, right? So make sure your facial expressions are always positive. See, even if you are smiling for your own self, even you'll be feeling happy. स्क्रीन से तो पॉजिटिविटी आप रेडिएट करेंगे ही करेंगे, बट स्क्रीन के अलावा भी आप खुद भी पॉजिटिव फील करेंगे. सो ट्राई एंड स्टे इन द मोमेंट. डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. तभी हमारा एक्सप्रेशन चेंज होता है ना, जब हम नर्वस होते हैं. मेरी टर्न आने वाली है, कैसे करूंगी मैं रैंप वॉक, हील्स में चल लूंगी मैं, क्या मैं अपने बारे में बात कर पाऊंगी. सो यू डू नॉट हैव टू थिंक. आपका सेशन स्टार्ट हो गया, इट मीन्स यू हैव टू बी प्रेजेंट हियर इन द सेशन, right? Hear what the others are saying, see how the others are performing, and then applaud for them. उनके लिए clap कीजिए, उनके लिए smile कीजिए, and even make them feel motivated.
ये करना है आपको हर सेशन में. So now that's how we're done with the facial expressions, that you will be smiling all throughout your sessions. Eye contact, I've already mentioned, you have to maintain an eye contact with the audience, with the jury members. How do you make sure कि आपका eye contact है? इसके लिए आप कैमरा को हमेशा आई लेवल पे रखेंगे, यानी कि इस तरीके से आप अपने कैमरा की पोजीशन रखेंगे that you are looking straight into the camera, and specifically when you are performing, you have to look into the camera. That will make sure that you're maintaining an eye contact, and eye contact is directly proportional to your confidence. होता है ना, जब आप स्टेज पे होते हैं, जूरी के सामने परफॉर्म करते हैं, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जूरी को डायरेक्टली पता चल जाता है that you're not confident, you're nervous. But when you maintain an eye contact with them and then you talk to them, they instantly know that yes, this girl is confident, this lady is very confident, she knows what she's doing, right? So now we'll come to hand gestures. अभी जैसे आपने ये सेशन देखा और बहुत लोगों से आप बात करते होंगे दिन में, तो कभी कभी ऐसा फील होता है ना that she's very blank, the way she's talking, she has no expressions, she's not using her hands. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा यूज करता है हैंड्स को, right? Now just look at me, if I'm using my hands a lot, you'll be distracted, you are feeling distracted, आप मेरा कंटेंट नहीं सुन पाएंगे, and you will be concentrating on my hand gestures. बहुत ही balanced hand gestures होने चाहिए. Now your hand gestures make sure that people are able to understand what you're saying and they can also retain what you're saying. यानी कि अगर आप एक बैलेंस्ड तरीके से अपने हैंड्स को यूज करते हैं एक प्रेजेंटेशन में, तो सामने वाली जो ऑडियंस है, सामने वाला आपकी बात को समझता है अच्छे तरीके से और साथ में उसको याद भी रखता है. आप चाहते हैं ना, आप अपनी प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं? ताकि जूरी मेंबर्स समझे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या शो करना चाह रहे हैं, और जूरी मेंबर्स आपको याद रखें, क्योंकि वो आपको याद रखेंगे तभी वो आपको एक अच्छा स्कोर देंगे. That is how important your hand gestures are. So make sure you're not copying anyone. आपको किसी को कॉपी नहीं करना है कि वो इतना ज्यादा हैंड मूव करती है तो मुझे भी वैसा ही करना है. That has to come naturally to you. राइट? आप नेचुरली जितना अपने हैंड्स यूज कर सकते हैं अपने बारे में एक्सप्रेस करने में, उतना ही आप यूज कीजिए, बट मेक श्योर यू आर यूजिंग योर हैंड्स इन एन इफेक्टिव मैनर. अगेन, एज आई से, डू नॉट कॉपी, try to portray your most authentic version in front of the jury members, but hand gestures cover a major part of your body language, specifically here. जब हम एक वर्चुअल स्क्रीन पे हैं तो आपके फेस और आपके आई कांटेक्ट के अलावा आपके हैंड्स हैं जो जूरी मेंबर्स देख सकते हैं. I'm sure everyone understood what I tried to say. If there's anything that you would want to understand, anything that could not be clarified to you, you may please ask us any questions. Thank you. Ma'am, Upali this side, one question, ma'am. Yes, please. Ma'am, am I visible now properly? Yes, you are visible. From the previous one. Okay, I cannot hear you. One second. Yeah, now it's okay. This Yes. position is okay now. Yes, this position is fine. See, now your posture, I can see कि आप एकदम proper posture maintain करके बैठे हैं. पहले क्या हो रहा था? I was only able to see your face. मुझे सिर्फ आपका face दिख रहा था. So now your posture is perfect. Your angle is perfect. Okay, thank you, ma'am. All right. All right, thank you so much Kirti ma'am, thank you. ये एक बेस है जिसको आपको समझ के अपने आगे के सेशंस में इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज ये हमारी टीम है, दिस इज FCR फैमिली. लेकिन अब जब आप मिलोगे तो आप प्रोफेशनल ट्रेनर से मिलोगे, तो आपका इम्प्रेशन बहुत सॉलिड जाना चाहिए. जैसे कि जैसे ही आपका कैमरा ऑन हो, सो दैट शुड बी, इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल शुड नोटिस यू. So I'm sure you understand, एक टी-शर्ट में कैंडिडेट बैठा हो और एक अच्छे वेल ड्रेस्ड कैंडिडेट हो, हमेशा फर्क रहेगा. एंड आई एम श्योर कोविड में 2 साल हमने अपने कपड़े बहुत अंदर रख दिए. नाउ देयर इज टाइम दैट वी टेक देम ऑल आउट एंड ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस एंड मेक श्योर वी पुट आवर बेस्ट साड़ीज, बेस्ट टॉप्स एंड ड्रेसेस ऑन स्क्रीन. So this is a good chance for you guys to understand, because यहाँ पे nobody is going to judge you for being overdressed. It's the the brighter the better it's going to be. This is a platform which appreciates women who are into all of this.
making yourself look good is important, because trust me, जो कॉन्फिडेंस आप में अच्छा लगने के बाद अपने आप को जब हम एक सर्टेन पिक्चर में डालते हैं तब आता है, तो is always different from a confidence you have in your t-shirts. I'm sure everybody agrees to that, right? So that is a brief of what we wanted to convey, and now it's time for me to introduce someone जो आप ही की तरह आप ही की जर्नी complete करके Mrs. India 2021 बनी थी, the one who started it from the scratch, Mrs. Dimpy Jain, the national winner of Forever Star India 2021, the one who took 3 crowns home. First as Mrs. Faridabad, then as Mrs. Haryana, and then as Mrs. India. So crown तो एक ही बहुत fascinating होता है. Imagine 3 घर लेके जाना, and this time you guys are going to be having the same opportunity. So it gives me immense pleasure, and I take immense pride in introducing Dimpy Jain in front of you all. Hi Dimpy ji, how are you? Hello Herry ma'am, hello Kirti ma'am, how are you? I'm fine, thank you ma'am. We are all good, and I can see all the women smiling. जैसे ही crown देखा, एक अलग ही level की चमक आ जाती है आपके चेहरे पे, because you imagine yourself into that. So nothing beats that feeling, I'm sure, and I would request you to take over and talk about your journey. Okay. So hello beautiful ladies, good evening everyone first of all, and best of luck and congratulations on your session. So before telling about my experience and journey, I would like to tell that FSIA is a community for empowering women and making them a stronger and confident personality. And look at me, I am, first of all, thanks FSIA for enhancing my overall personality. Like I was a homemaker, now I am a confident person. I must say confident personality who has won 3 crowns. Mrs. Faridabad as a city winner, then Mrs. Haryana as a state winner, and finally Mrs. India as national winner. So all thanks to FSIA for giving me this opportunity, for making me so beautiful and so stronger personality. First of all, thanks to FSIA ma'am, especially Kirti ma'am, and all the mentors, Herry ma'am, all the mentors here. Secondly, talking about my experience, it was a remarkable one. I have learned throughout my journey, be it getting in handy makeups. As you can see, this makeup is done by me only, and I have learned through here only. Be it styling, postures, like ma'am said, that you will start wearing your stilettos. Right now, I have weared my stilettos here. Although I'm not walking, still I have worn that. Because stilettos, jaisi aap pehnoge na, you will feel starting confident. So I think when you come to a beauty pageant and when you sit here, first of all, आप अच्छे से तैयार होके आओ, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिलता तैयार होने का. तो जब हम आते हैं ब्यूटी पैजेंट में, लाइक ब्यूटी पैजेंट इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी. जब आप आते हो तो तैयार होके, यार जितना कॉन्फिडेंस आप में है, आप में अपना आप दिखेगा, और यू लुक ब्यूटीफुल. एंड व्हेन यू डू लुक ब्यूटीफुल, यू विल ब्यूटीफुल इनसाइड आउटसाइड बोथ. तो मैं तो जब भी आती थी, आई ऑलवेज टुक आई थिंक 1 hour टू पूरा मेकअप करना और ढंग से बैठना और सुनना सारी बातें. एंड देन द ग्रूमिंग सेशन, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू दैट enjoy your sessions. ये मत सोचो it's a competition. Learn it, feel it, and enjoy it throughout your sessions. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे. मतलब मैं इतना कह सकती हूँ कि जब आप यहाँ से जाओगे निकल कर, you will change yourself. पूरी personality change हो जाएगी आपकी यहाँ से जाने के बाद. Then first of all, I am giving my introduction. I am Dimpy Jain from Faridabad, 47 years young, and beautiful mother, and a beautiful daughter of 20 years. And then I've told you about my experience. And another big achievement is that I'm very delighted to FSIA. I'm working as a state representative and a part of a team member. So that's all about my journey. And I would like to recommend you just true to yourself, enjoy yourself, and खूब जितने करना है मजा आप यहाँ पे कर लीजिए. उसके बाद आप देखोगे क्या चेंज आएगा यहाँ पे. So thank you all of you. Thank you ma'am, and best of luck to all the contestants. Thank you. Thank you so much, Dimpy ji. Thank you. I'm sure आपकी energy ने has put everybody into an energetic picture.
Thank you so much for being here. It was an absolute pleasure having you on board. And we shall see you really soon. Let's, of course, move now to the benefits of the platform, of what the platform has to offer apart from your training sessions as well. So who better than Jaya Chauhan to take over and talk about it? So I would request her to, take the mic off. Thank you, Herry. And thank you, Dimpy ji, for sharing your journey. And I think आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा कीर्ति मैम को बात करते हुए when she has told you about the virtual presence. I have noticed some faces, जैसे कि कीर्ति मैम ने बताया, there are a lot of people in the background who are noticing you. There are a lot of juries who are noticing you. तो जिनके videos off है उनके लिए next time के लिए make sure you on your videos. There are a lot of faces जिनकी strong screen presence है. Like I would like to even mention the names of Pooja Nag. You were nodding the head also during the whole introduction part. जैसे जैसे jury आपको बता रहे हैं, you are showing the interest. So that is something like Akanksha Agrawal ji and Bhuvneshwari, Nidhi Sharma, Ranjana, everybody. So this is for all of you that you take interest. So yeah, this is done by Kirti ma'am, and make sure कि आप अगले हर session में when you're meeting the professionals, you show your screen presence in more and much better way, क्योंकि आपको idea लग गया है कि किस तरीके से screen पे आना है. Let's talk about what happens in the participation process. There is definitely a training and grooming program which is going to be there for 3 to 4 months. बट और क्या एडेड बेनिफिट्स होने वाले हैं इसके साथ में, जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया. नाउ यू आर अ ऑफिशियल पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरएवर स्टार इंडिया. दैट मींस यू आर अ लाइफ टाइम मेंबर एज वेल ऑफ फॉरएवर स्टार इंडिया. दिस मेंबरशिप ऑन द FSIA app will provide you a lot of upcoming opportunities and the business opportunity, not just by Forever Star India, but with the different platforms also, because you will be able to have the networking with different set of people. So ये benefit जो membership का आपको provide होने वाला है, that is available in your profile. And definitely your profile will be verified and available on Forever Star India's website as well as the app also. So who has not downloaded, please do download it from the Play Store. Let's talk about the Google ranking now. आप सब लोगों को ये I think ये word बहुत अच्छे से याद हो गया, that unique identity and the Google ranking part, because the Google ranking is something जो हम audition से discuss करते हुए आ रहे हैं. So जिन लोगों की अभी तक profile create हो गई है and live भी हो गई है website पे, please check if your profile is updated fully. क्योंकि Google ranking जब आती है when someone is searching your name over Google और profile में आपके there is nothing in the profile to inspire others. So you have to make sure for the Google ranking part, which is going to be there in next few days. नहीं है तो आप update कीजिए अपनी profile. That is the main part. आप अपना social media update करते, you put pictures on Instagram, you put pictures on for Facebook also. So that's how you have to maintain your Forever Star India's handle. क्या करना है? You know the login link. Login कीजिए अपनी profile में, go to this edit profile section. वहां से you update each and every detail. There is not just the pictures option. There is description. There is achievement. There are video sections which are available. So आप अपनी details जब तक वहां पे नहीं डालोगे, we can't rank them over Google also. So make sure you update your profile fully, not just for for 7 days or 8 days. You have to update it regularly. Whenever you're clicking a new picture, why don't you think, why can't you change the profile picture also? So that's how you have to maintain your profile, and the updated profiles are going to rank over Google. Definitely there will be a beautiful hard copy certificate and the sash of participation, which will be delivered at your doorstep, in I think in a month. So make sure अगर किसी की formalities pending है तो वो आप अपना account manager से connect करके complete करें. Profile live आपकी FSIA पे लाइफ टाइम रहने वाली है. Just one thing, जो Google ranking मैंने आपको बताया है, उससे साथ साथ में connect होता है social media. Now I think आप डिम्पी जी से आज मिले हो. You're going to search her over Google. आप definitely Google कीजिए, आप अभी भी बैठ के Google कर सकते हैं. You'll see Dimpy's profile over Google ranking on top with the upgraded version, definitely because she's a winner. वैसे ही अब आपको अपना social media maintain करना है. You just don't have to think कि मैं यहाँ पे I'm just here to give my rounds and then winner बनूंगी, then I will maintain the social media. No, you have to set up your social media from today onwards.
क्या दिखाएंगे आप जब लोगों को विनर बनेंगे, व्हाट पीपल विल सी इन योर प्रोफाइल. सो ये मेंटेनेंस जो है आज से आपको बिल्डअप करनी है. कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है यू नीड एनी हेल्प, प्लीज कनेक्ट विद योर अकाउंट मैनेजर. एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू हैव अ क्रिएटिव कंटेंट. सोशल मीडिया रीचेस किसको नहीं चाहिए आज के टाइम पे. आई थिंक वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया ओनली. फर्स्ट टाइम आपने एड देखा था ऑन सोशल मीडिया एंड देन यू हैव अप्लाइड देयर, राइट? So social media is the key of networking. Make sure you update your stories and tag on Forever Star India's Instagram handle so that we can repost your story. It should be a relatable content. मतलब ऐसे कुछ भी बना के हमें अपडेट नहीं करना है. सो मेक श्योर यू अपडेट योर डेली. इफ समवन इज डूइंग योगा, इफ यू आर हैविंग अ स्किन केयर और एनीथिंग लाइक दैट, मेक श्योर यू repost. We will repost the stories. आप सोशल मीडिया हैंडल जो FCI का इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर डेफिनेटली रिपोस्ट कर अपडेट कीजिए. And that's how we are going to give you a lot of reaches through social media. Imagine आप बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे हो. There will be only 5 members I think जो कुछ content create करेंगे and they will tag us on Forever Star India, right? So ये members की visibility जो है it increases. So you have to make sure कि आप ये process जल्दी से जल्दी follow करें. Crowning ceremonies पे आते हैं अब. Training हो गई, talent rounds हो गए. What is going to be there in the ceremony? As you have heard that we have crowned 300 winners last year, and we are going to crown 700 winners this year. So the ceremony will take part in two different sections. City and state winners will be crowned in Hotel Marriott Jaipur in the month of September. There will be few selected state winners who will be coming in the ceremony of national winners in the month of December. The venue has not been decided yet, but definitely we are going to update you in upcoming few months. But जो journey city and state winners की होने वाली है, make sure आप उसे बहुत up से maintain करने लग जाए, because ये maintenance जो है it is important. अभी से build up करेंगे, अभी से practice करेंगे, that is going to give you a lot of benefits. ठीक है, ये benefits मैं आपको already समझा चुकी हूँ, but इसे practice में लेके आना है जिससे कि आपकी profiles जो है visible हो, आपकी visibility Google तक भी जाए. Why just to be there on Google जब हमको inspire नहीं करना है कुछ. So make sure there is an inspiration. आप अपने विलेज के लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, आप अपनी कम्युनिटी में किसी को भी इंस्पायर करना चाहते हो, देयर शुड बी समथिंग इन योर प्रोफाइल which is interesting. Upload a lot of pictures, definitely. So I think I shall take a leave now, and Herry will be guiding you for the upcoming process. Just one thing, that enjoy each and every moment you are here with Forever Star India. So all the very best. Thank you. Thank you so much, Jaya. Thank you. And yes, having said that, and that's us winding up today's session. Some particularities that you need to take care of. Again, re-mentioning the fact that the app is going to get launched soon. So be conscious of the fact. Trust me, it's going to be a one-stop platform for all your profile-related issues. You will have your profile updated there, and it will be a space for you to interact with so many professionals from across the country. आप अपना टैलेंट दिखा पाओगे, विटनेस कर पाओगे, एंड इनफैक्ट अपने कलीग्स, आई मीन जो आपके को पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका टैलेंट अप्रिशिएट और एक्नॉलेज कर पाओगे. बिकॉज आज के टाइम पे आई एम श्योर हम लोग जितना एक दूसरे से सीख सकते हैं, इट्स इवन बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन वी कैन लर्न फ्रॉम एनी एक्सपर्ट ऑल्सो, बिकॉज देयर इज सो मच टू इंस्पायर, गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम. So that is, I would now take leave of Kirti ma'am and Jaya, for today's time. Thank you so much, ladies, for being here, and I will just have the last word with these ladies. Thank you.